Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a much demanded topic that is the conflict or the crisis, I would say, not conflict, crisis in Latin America, because it will include conflicts also, economic crisis and many other things. Okay. So I hope you are aware recently we had a class on G7 where G7 summit also talked about the crisis in Haiti, Venezuela, etc. And that is why people were demanding, sir, have a session on this also. So I said, okay, let's have a session. Let's begin with that. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes. Okay. Am I audible? Fine, let's begin. So basically, first of all, go to the live section of our YouTube channel. And if you scroll down, few days back, we had a session on this 51st G7 summit, where this was discussed, the Latin American countries, the crisis. So उसमें Africa, conflicts in Africa and Haiti were discussed. Okay. So when it comes to Africa, we have already discussed. ये वाला जाके देख लेना, live section में जाना. Go to the live section of our YouTube channel. Scroll down. You will find this current conflicts in Africa. जैसे Sudan में civil war is happening, Nigeria में conflict, Somalia, है ना? Different what we call it as militant or rebel group in these countries we have discussed. Okay. And similarly, I have discussed about 57 G7, 51st G7, where I have discussed, I mean, they talked about Haiti also and some other Latin American countries. So that's why I've decided to discuss this also. So let us begin with what is actually, can anyone tell me what is Latin America? What is Latin America? And there are two continents. One is called as North America. This is one continent. Another is called as South America. So how Latin America is different from these two continents? Is it exactly South America or something different? Yes, Krishi Sachdeva, Harsh Sharma. You both are writing South America, but okay, fine, but not exactly South America. South America plus some parts of North America also. Okay. It is not exactly South America. So that is what I wanted to highlight, because Latin is a language like and a Portuguese or Spanish language is spoken in this Latin American countries. Okay. So what exactly it is? First, let me the map if you can see it. So I'm sure in your school days you must have been taught about the different continents. Okay. तो देखो जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऐसे जनरली डिफाइन करते हैं. सो इज दिस इज इसके ऊपर जो है इज देयर है ना. दिस इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना. और ये वाला जो है दिस इज अमेरिका कॉन्टिनेंट, राइट. ओके. बट व्हेन इट कम्स टू लैटिन अमेरिका जनरली वी टेक फ्रॉम हियर मेक्सिको से ऐसे लेते. सो दिस वन इज लैटिन अमेरिका. This red one is Latin America, except some countries. So we have to exclude some country also. Here, यहाँ पे कुछ countries है इसको exclude करना होता है, but otherwise, by and large, this is the case. So from Mexico south, all those countries are called as Latin American countries. So आप यहाँ से okay. So if you see it carefully, these are the South American countries plus some Latin American plus some North American countries also. ठीक है. अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ से this is Latin American countries. This is Latin America, right? Where Spanish and French, Spanish and Portuguese were ruling once. ठीक है. ये वाली ये कुछ कंट्री को एक्सक्लूड भी करते हैं. These countries are excluded because they are actually part of जैसे फ्रेंच गुयाना वगैरह फ्रांस का टेरिटरी है ना. So that is what you should know. Some of these territories are excluded in this Latin America. So exactly this is Latin America. है ना. अब देखो this is Latin America. ये मैक्सिको है. मैक्सिको से स्टार्ट हो रहा है नीचे तक पूरा. ठीक है. और ये वाला को छोड़ करके दिस वन इज एक्सक्लूडेड. कुछ एक आध दो इधर उधर भी थोड़ा बहुत डालें छोड़ के, बट बाय एंड लार्ज दिस इज द आइडिया, है ना. ओके. यस, यू शुड नो इट बिकॉज़ यस दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. इन अमेरिका क्या होता है ना. ओके. यस. सो द कल्चरल रीजन ऑफ अमेरिकास वेयर the language Spanish and Portuguese are spoken. So there was a time when
was controlled by Spain and Portugal. इस वाला हिस्से को स्पेन का वेस्ट साइड वाले को और इस वाले को. So that is what you should know. And this is Mexico से साउथ में जितने भी कंट्रीज है मोस्टली है ना, साउथ अमेरिका, कैरेबियन और कॉर्नर्स है ना. But despite in the same geographical zone, English and Dutch speaking countries are excluded, like Suriname, Guyana, Falkland Island, Jamaica, Trinidad and Tobago and Belize. These are small countries. Some of the countries are removed है ना. जैसे Belize I think यहाँ पर होगा ना, ये फ्रेंच गुयाना वगैरह होगा, ये फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है. These are excluded. It was not clear. Is it getting stuck or? Is it getting stuck or? Clear है ना? एक बार देख लो, ठीक है. Okay, so let's move on further. तो हम लोग we had discussed about Latin America. तो हम लोगों ने लैटिन अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लिया है. Now let's talk about हेती. तो चलो हम लोग थोड़ा सा हेती के बारे में डिस्कस करते हैं. चलो, so let us see. तो लैटिन हम लोग बताया यहाँ से नीचे जितना है सब मोस्टली दे आर एक्चुअली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. So हेती is here, यहाँ पर है हेती, which we are going to discuss today. Okay, so let me zoom in. Here is Mexico. ये क्यूबा है ना, यहाँ पर है हेती, ठीक है. और मैं जूम कर देता हूँ, देखो क्यूबा, मैक्सिको, दिस वन इज हेती और ये डोमिनिक रिपब्लिक है. तो ये वाला जो है दिस इज हेती. We are discussing it because this was the crisis in Haiti was discussed in the recent G7 summit also. हाँ, हेती इज अ कैरेबियन कंट्री, राइट कृषि सत्यवा. देखो इस पूरे रीजन को ये रफली कैरेबियन बोल देते हैं, ठीक है. एंड द एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज कैरेबियन. खास के कैरेबियन आइलैंड्स जो है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर होगा, यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स वही जो वेस्ट इंडीज, ठीक है. कैरेबियन सी इज देयर. So basically here is Haiti and this was discussed in G7. That is why we are going to discuss. So let us begin with Haiti. So Haiti, the current crisis in Haiti started in the year 2023, 2018, 2020, 2006. What is the right answer? The right answer is option B. 2018 is the right answer to this question. Okay. So this crisis is there since 2018. So B is the right answer to this question. We will discuss that. What exactly is the scenario, etc. So let's move on further. The current crisis in Haiti was started because of what? The assassination of president, rise in fuel prices, failure of education institutions to conduct exam on time, president decision to join hands with USA. President's decision होगा ना, apostrophe yes. So हेती का जो कॉन्फ्लिक्ट है 2018 में स्टार्ट हुआ, वो कहां से स्टार्ट हुआ, क्या था प्रॉब्लम मीन? You have to tell me that. Anyone? So the right answer is, I'm waiting for the response. I'm giving you a few seconds more because I have not got the right answer. Some people have said A, some people have said D. No, it started in 2018 with rise in fuel prices. That was the issue. So B is the right answer to this question. So yes, Adok Shanat, now you are right. B is the right answer. Let's move on to the next question. The next question says there was an attempt to overthrow the president of Haiti in a military coup. This happened in coup, matlab C-O-U-P it is written, but it is pronounced as coup. It means overthrow of the government, है ना? Overthrow of the current government.
Why is the chat looking different? Even I'm also thinking of the same. I need to find out the reason. हाँ. So coup करके उनको हटाने की कोशिश की गई थी. There was an attempt for a coup. So when the right answer is option B, February 2021. So there was an attempt for that. So B is the right answer. अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं. What happened was, so it started in 2018 in response to increased fuel prices. This is the main reason. These protests gradually evolved into the resignation of the president Jovenel Moise. That people started protesting that he should resign. Led by opposition politician Jean Charles Moise. He's the opposition politician. Although the name are similar, but he's in opposition and he was the president. They demanded a transitional government, provision of social reform, prosecution of corrupt officers. Means they believe that the government is corrupt and that is why the fuel prices are rising. From 2019 to 2021, massive protests called for Jovenel Moise's government to resign. Moise had come to power in 2016 presidential election, which had voter turnout of only 21%. Yes, that was also an allegation. That which is with a small, with a very small voter turnout, it means people are not happy. People do not consider voting or election as important. That's why only 21, or perhaps they do not trust the voting process, something like that. That's why only 21% people came on board, and he won it. Previously, the 2015 election had been annulled due to fraud. Annulled means it was earlier. The 2015 election was cancelled also. So what happened was, so since he was the president on February 2021, there was an attempt of coup d'etat. So there was an attempt to remove him, but he survived that. Means there was no military coup. I mean, there was an attempt, but it was crushed. February 2021. Now what happens is after that, the president of Haiti is assassinated. So when was the president of Haiti assassinated? July 2021, August 2022, November 2024, April 2024. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है? President of Haiti was assassinated in, काफी फेमस हुआ था उस टाइम पर. I'm expecting everyone to answer. Yes, Harsh Sharma and Krishi Sasdeva, you both right. July 2021. Yes, Adok Shanath, you are also right. On 7 July 2021, Jovenel Moise was assassinated, arrested by a group of 28 foreign mercenaries. That is what you should know it. उसके बाद क्या हुआ? What happened was कि there was Ariel Henry who assumed the office of acting prime minister. So Jovenel Moise was the president. He was assassinated by an alleged group of 28 foreign mercenaries. So he was a sitting president. So president ko marna, serving president ko, of course, it is of course a very big news. And I still remember I got to know at that time also. I taught my students at that time 4 years back. Let's move on. हाँ, आप देख सकते हो. फिर Jovenel Moise was killed in an attack. Okay. So it is said that his widow or his wife was also involved in that. Okay, आप देख सकते हो assassinated Haitian president's widow among dozens indicted over his death. So there was an allegation that his wife Martine Moise was also involved in the murder of the prime minister, of that person, of that president, है ना? Jovenel Moise की हत्या के लिए उनकी wife भी involved थी, ऐसा कहा गया. So that were the reports. So after that, he took the charge as acting prime minister. बहुत से लोग बने, Ariel Henry बने, है ना? Many other people बने. अभी Fred Jean है, transitional president council that is called. So there is no full-fledged president or prime minister. He's actually current one is transitional president council, Fred Jean. That is what you should know. अभी से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? So we'll discuss little bit about the history. So हुआ ये था कि वेनेजुला से लोग oil मंगवाते. I hope you all are aware. So they buy oil from Venezuela. And I hope you are aware the largest oil producer or oil reserve is in Venezuela. है ना? Okay. तो हुआ ये कि when Venezuela stopped shipping oil to Haiti in March 2018, यहीं से सारी problems शुरू हुई. All the problems started here when Venezuela stopped shipping oil to Haiti. This led to fuel shortage. So with removal of government subsidies in July, kerosene prices went up. So of course, लोग हंगामा करने लगेंगे. So things will go out of control. And everything started from here. And people started protesting कि पेट्रो कार मनी का क्या हुआ.
Where did the petrocarb money go? So what is petrocarb? Actually एक agreement है, it was a deal between Venezuela and Caribbean countries regarding oil purchase agreement. Okay, we'll come to that. Phoenix, हाँ. तो एक्चुअली क्या है, तो वेनेजुला और कैरिबियन मेंबर्स इन वेस्ट इंडीज कंट्रीज के बीच ग्रुपिंग का मतलब ये एक अग्रीमेंट है ऑयल सेल के लिए, ठीक है. बट दैट इज व्हाट पीपल आर डिमांडिंग कि हुआ क्या, क्यों, व्हाई वेनेजुला कैंसल्ड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल and why we are witnessing fuel shortages. It means there is something wrong in the leadership, etc. And that is why the movement started in 2018. उसके बाद से things became uncontrolled, etc. Okay, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था. तो कैरेबियन इस पूरे रीजन को ही कैरेबियन कह देते हैं कई बार, ठीक है. सो इंटायर रीजन, सो हेती एटसेट्रा एंड ऑल. तो इस पूरे रीजन को कहां चला गया, समटाइम्स दिस इंटायर रीजन इज कॉल्ड एज कैरेबियन, ठीक है. हालांकि जब कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं तो यहाँ पर है कैरेबियन आइलैंड्स और वेस्ट इंडीज आइलैंड्स व्हिच इंक्लूड्स गुयाना, बारबाडोस एंड सरीनेम एटसेट्रा. लाइक दीस, लाइक सरीनेम तो यहाँ हो गया, ट्रिनिडाड टोबैगो, जमाइका एटसेट्रा. So we are talking about it. What are the issues? Misuse of loans from Venezuela, petrocarib का money में, okay. Authoritarianism का allegation था प्रेसिडेंट जोवेनेल मॉइस के अगेंस्ट. तो मेन जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, मेन द पावर इज विद द प्रेसिडेंट. सो पावर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ. पुलिस ब्रूटैलिटी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एलिगेशन है, ओके. देन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद रेजिग्नेशन वगैरह हुआ. हाँ, मेन यही है कि असैसिनेशन ऑफ जोवेनेल मॉइस, और ये जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश की थी, ही वाज आल्सो रिजाइन, हैड टू रिजाइन. और गैंग वॉर भी होता है, ये वाला गैंग वॉर, यही न्यूज में था, मैंने देखा था कहीं ये टर्म. और ये पूछ सकते हैं बिकॉज जैसे ऐसे पूछते हैं, I told you when I was teaching about conflicts in Africa, they ask sometimes exam ask these questions कि FRG9 या revolutionary forces of G9 family and allies, this is a rebel group or a militant group of which country? So Haiti. ये मैंने कहीं पढ़ा था G7 के डॉक्यूमेंट्स में भी, इसका नाम as far as I remember, ठीक है. ये पढ़िएगा. और ये BWA काले और एक GPEP. So these are some of the militant gang, जो भी कह लो आप उसको. So please remember this, ये टर्म याद रखिएगा, because I still remember, ये मैंने पढ़ा था G7 में डॉक्यूमेंट, somewhere it was mentioned और somewhere मैंने recent days में पढ़ा था ये. So of course it becomes important. अगर कहीं आ रहा है न्यूज वगैरह में अक्सर, तो just have an idea, ठीक है. हेती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना. So हेती के बारे में क्या जानना है, सबसे पहले इसकी कैपिटल जानना है, ठीक है. Port-au-Prince is the capital. ओके, ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट काउंसिल, इसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्या डिफाइन कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर इंटरिम है और प्रेसिडेंट ये है. सो मेन आई थिंक प्रेसिडेंट होते हैं, बट ये सब इंटरिम में काम चल रहा है. तो वो लिखा ना सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल इज वेरी सिमिलर टू आई थिंक श्रीलंका वगैरह में जैसे होता है, ठीक है. सो टेक्निकली प्रेसिडेंट विल बी मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. अब पूछे थे नहीं कौन ज्यादा पावरफुल होता है. सो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बट अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट है, देयर इज नो फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट एटसेट्रा, बस काम चला हुआ है. 87% Christians are there. You will surprise. 10% no religion, means 10% are, at least 10% are atheist or do not believe in God, है ना. So that is what you should know. ये हो गया. और जो सबसे फेवरेट है उनका वो है कि वो लैंग्वेज, और ये पूछते हैं करेंसी. दिस इज द करेंसी, GOURDE, ठीक है. और ताइनो लैंग्वेज से रिलेटेड इनका कुछ लेना देना, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है. दैट इज मोर देन एनफ. पूरा रिसर्च नहीं करना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेनेजुला, ठीक है. सो वेनेजुला में चलते हैं. यहाँ पे वेनेजुला है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला? कैपिटल बताइए. यहाँ पे एक बहुत फेमस रिवर है, ओरिनोको रिवर, सुना है ना. और ये बहुत फेमस फॉल है ना, एंजल फॉल. हैव यू हर्ड दैट? हाईएस्ट वाटरफॉल. तो इट इज फेमस फॉर, इट इज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इज इन वेनेजुला, ठीक है. नॉट सऊदी अरब, नॉट ईरान, ठीक है. ये पूछते हैं, मैंने देखा किसी एग्जाम में पूछा था. हाँ, यस, मदुरो यहीं से. हाँ, विल डिस्कस अबाउट दैट, राइट. मदुरो प्रेसिडेंट का नाम है. कैपिटल आई वाज आस्किंग, कैराकस इज द कैपिटल, ठीक है. Okay, so the current crisis in Venezuela is marked by what? Yes, Phoenix, you were right. Caracas is the capital. Current crisis in Venezuela is marked by oil shortage, hyperinflation, president's assassination, US sanction, both B and D. What is the right answer? Yes, the right answer is hyperinflation. Of course, Venezuela में काफी ज़्यादा hyperinflation means too much inflation, more than 5, 10, 15, 20%. And US sanction भी of course. देखो होता क्या है, जहाँ wherever you will find communist government, है ना,
communist या socialist type government, of course, there are chances where you will see US sanctions. And because, of course, US is a capitalist country, so that is also one reason. So E is the right answer. Fine. So basically, there was a president till I think 2013 के आसपास तक, Hugo Chavez, very famous one. And since during his time, the economy started collapsing. And his successor, Nicolas Maduro, is also not able to handle it. So we are witnessing hyperinflation. तो इससे सारा कुछ related होगा, starvation, disease, crime, massive immigration. सब कुछ उसी से related है. अगर महंगाई बढ़ेगी, largest oil reserve, right? Phoenix, just we have discussed. If the prices will increase, what is the problem? सब कुछ वही से problem arise होता है. अगर सामान महंगा मिलेगा, what will happen? Everything, the medicine will be costly, then things where people will starve, people will have job crisis, etc. And it is said that it is the worst economic crisis in Venezuela's history, even worse than the Great Depression of 1929 or hyperinflation of Zimbabwe. उससे भी बुरा हाल है, ऐसे लोग कहते हैं. So that is what they are saying. ये बेस्ट है, आप देख सकते हो लैटिन अमेरिका का जो जीडीपी पर कैपिटा है, इट इज राइजिंग. दिस वन ग्रीन वन, द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का. वेनेजुएला का इट वाज हाई, देखो 95, 2000, 2005 ये हाई था यहाँ तक, 2010, 50. अब यहाँ देखो 2015 से स्टार्टेड डिपिंग एंड इट्स सो फास्ट डिप. देखो 2022 में इतना नीचे आ गया. अब देखो इतना अच्छा था, धड़ाम से नीचे गिर गया. सो इट मींस देयर इज समथिंग सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस. जीडीपी पर कैपिटा यानी जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. So it means it is serious. There is something serious economic problem. Okay. तो इसमें क्या क्या है, बोलीवर रेवोल्यूशन आया था, वो साइमन बोलीवर का बहुत फेमस था. इसको भी एलिगेशन कहा जाता है कि perhaps because of this. Then Hugo Chavez was not able to control it properly. Economic sanction means US and other countries had put sanction later on. Then of course decline in oil prices. Why? Because their economy is very much dependent on oil selling. Oil बेचने पे dependent होते हैं. अगर ऑयल का प्राइस गिर जाएगा तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी. Since 2008 financial crisis, of course they will not be able to sell because that is what they sell and earn money. तो वही गिर जाएगा. देखो 2010 से ये this Venezuela crisis is actually since 2010. Okay, that is what you should know. तो आप देख सकते हो सैंक्शन ड्यूरिंग वेनेजुएलन क्राइसिस. देखो ये ब्लू वाला वेनेजुएला है और ये जो रेड कंट्रीज पूरा साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट सैंक्शन लगा दिया है. Bans entry of Maduro's government official. यानी Maduro, who is the president of Venezuela, his officers cannot even go to these countries. ज्ञानपीठ अवार्ड नंदिनी, ओके आई विल थिंक, देखता हूँ अगर मौका मिलेगा so we'll have a class. ठीक है, on ज्ञानपीठ. ओके, ये हो गया. Then Hugo Chavez was the president from 1999 to 2013 except 2002 में 47 hours को अगर हटा दो. Otherwise he was the president from 1999 to 2013. Again he was socialist communist ideology, so of course he must not have very good relation with America. You can understand. तो actually generally क्या होता है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज उनका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है जनरली विद यूएसए, स्पेशली here a lot of countries. है. तो he was the president, आप देख सकते हो सोशलिस्ट पार्टी से he used to belong to. तो of course that is what the idea is. And Hugo Chavez is regarded as one of the most influential and controversial politician. He was very much inspired by Fidel Castro of Cuba. आपने नाम सुना है Cuban Communist Revolution? Fidel Castro, very famous person, Fidel Castro. So ये भी Cuban communist था. So of course whenever there is a communist leader, so Cuba had issues with USA etc. है ना, तो communist party का of course they got support from USSR, Soviet Union etc. of course. So जो जहाँ भी communist countries हैं और the communist ideologies, they get moral support है ना from USSR etc. Okay, तो ये क्यूबा है, ये वेनेजुएला है. So in fact Fidel Castro had influence on Hugo Chavez. So ये Hugo Chavez है, was the leader at that time, and Fidel Castro was there who brought Cuban revolution 1959 वगैरह में आया था. आप चेक कर लेना एक बार, प्लीज चेक करिए, है ना. Cuban Missile Crisis 1961, right? 62 में हुआ था I think. Yes, crisis as they were very important event at that time. Good. And so now Nicolas Maduro, after Hugo Chavez lost the election, so I mean after Hugo Chavez died, I mean we are having a new president, Nicolas Maduro, and he is also from the same political party and with the same ideology, and it is said that he is also not able to control the inflation crisis. तो आप देख सकते हो अभी लास्ट ईयर में इलेक्शन हुआ था 28 जुलाई 2024 को, है ना, and he won it. So his third term will start from January, है ना. So he won the election last year also, है ना, आप देख सकते हो. तो आप देख सकते हो Nicolas Maduro wins third term as president. ये लास्ट ईयर जुलाई का है,
एंड दिस थर्ड टर्म के लिए जो चार्ज लेना था जनवरी में, है ना, दैट इज हाउ इट वाज. हाँ, there were a lot of allegation. Even this year also there was an election, and this is not presidential election, this is an election of parliament and regional election. Here also his party won, and there is an allegation the opposition ने boycott कर दिया था. Opposition believes that the elections are not fair. तो opposition का ये कहना है कि आप इलेक्शन सही से नहीं, ईमानदारी से नहीं करा रहे. So have the parliamentary elections. Okay, 23 out of 24 state governors provinces. ये तो करंट अफेयर्स का भी पार्ट है. दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना. वी हैड डिस्कस्ड इन मंथ एंड करंट अफेयर्स आल्सो इवन इन द पेड क्लासेस, है ना. सो आप देख सकते हो ना, तो 2010 से ही जब हुगो चावेज वाज द प्रेसिडेंट टिल 2013, है ना, तो 2010 में ये क्राइसिस शुरू हो गया था, शॉर्टेज इन वेनेजुएला. क्राइसिस इंटेंसिफाइड, है ना, मोर एज अ रिजल्ट ऑफ लो ऑयल प्राइस. अगेन, if there is a international low oil price, of course they will not be able to get more money when they export oil, है ना, बिकॉज अगर जो चीज आप बेचते हो वही उसी का मार्केट स्लो है तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट तो करेगा ही. एंड दे वर नॉट एबल टू कट स्पेंडिंग एटसेट्रा. ओके, तो वो स्पेंडिंग को रिड्यूस भी नहीं कर पाए. देन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब फेक एनकाउंटर्स. देयर आर एलिगेशन ऑफ फेक एनकाउंटर्स आल्सो टू सप्रेस द पीपल ऑफ दोज हु आर अपोजिंग देम. So these are the allegations: political corruption, human rights violation, authoritarianism. These are the allegations against the government of Venezuela. Okay, तो उसके बाद आप देख सकते हैं economic war on Venezuela, falling international price, international sanctions also were put by countries. Okay, है ना. तो यूरोपियन यूनियन, लीमा ग्रुप, यूएस, इन लोगों ने सैंक्शन लगा दिया. That is also the thing you should know. And it is said that crisis evolved because of socialist and populist. देखो सोशलिज्म में क्या होता है? It's pro poor. So pro poor में क्या होता है, कई बार बहुत सारे freebies देना शुरू कर देते हैं. They start giving too much freebies. So होता क्या है, you want to become more populist कि I'll give this much to poor, that much to poor, है ना, because socialist ideas are like that, communist socialist ideas. तो कभी-कभी इतना ज्यादा हो जाता है, they give so much that of course expenditure become very high because you want to please the common people and you do not have much revenue. So in that case also crisis happens and of course these problems erupts. तो ये भी समस्या होता है. हाँ, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कृषि सदेवा, छोटे छोटे नोट्स बनाना, बहुत लंबा लंबा नहीं है. आप देख सकते हो वेनेजुएला के, देखो 2019 का है, जो कि क्राइसिस 2010 से चल रहा है, सिंस 2010. यू कैन सी, देखो कितना महंगा हो गया, कितना सलोगे तो इतना कुछ मिलेगा. ठीक है, तो देखो इन्फ्लेशन, देखो 2018 का डेटा है, स्लाइटली ओल्ड डेटा बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया. देख रहे हो कैसे हुगो चावेज इलेक्टेड 2002 और हुगो चावेज डाइड इन 2013. हाँ, मदुरो आ गया था 2013 में. सो हुगो चावेज के जमाने में देयर वर सम इश्यूज, बट नसीब मदुरो आप देख रहे हो, इन्फ्लेशन देख रहे हो कैसे भाग रहा है. कैन यू सी इन्फ्लेशन यहाँ से when Nicolas Maduro got elected, one states 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 13 lakh% pop, very high, है ना, inflation, like he was not able to control anything. So of course, और वेनेजुएला इकोनॉमी कोलैप्स अंडर मदुरो, है ना. आप ये भी देख सकते हो, यहाँ देखो, ये हुगो चावेज का, हुगो चावेज से लेकर मदुरो तक थोड़ा बहुत इशू रहा है यहाँ पर. ओके, अग्रीड, यहाँ पे भी देयर वर सम इश्यूज, लेकिन मदुरो के पास तो नीचे ही जा रहा है. सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. ओके, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. देन बोलीवर जो करेंसी है वो कितना डिवैल्यू हुआ है, ये देखो, वर्सेस यूएस डॉलर. ये ऊपर जा रहा, अच्छी बात नहीं है, डिवैल्यूएशन है ये. आप देख रहे हो 2018 2019, यहाँ पर 2019 से जस्ट पहले समवेरी ये ऐसे भागा है. सो कैन यू इमेजिन, so that depreciation of currency. Then oil production is falling. क्यों? वही कि अब oil, देखो यहाँ पे oil production ठीक था, थोड़ा बहुत नीचे गया हुगो चावेज से लेकर मदुरो तक, बट यहाँ है again one of the reason they are citing is कि oil prices are low, so they are not getting good prices. Maybe that can be the reason, and there can be many other reasons also. तो basically लगता है इनसे संभल नहीं पा रहा, perhaps he is not able to control. So these are the things. अब देखो ये 16 जनवरी 2025, अभी 5 months back old article. Venezuela inflation was 48% year on year unit 4. आप समझो कितना ज्यादा है. It tells them MPs. हाँ, सैंक्शन की वजह से हो सकता है. Yes, you're right. एक तो सैंक्शन की वजह से भी होगा, दूसरा oil prices लो होगा. Yes, point is right. हाँ. So these are the things. तो आप देख सकते हो कि कौन-कौन लोग मदुरो के साथ खड़े होते हैं. तो मदुरो के साथ ये रशिया, चाइना ये लोग खड़े होंगे, of course, और जो इनकी ऑपोजिशन है उनके साथ अमेरिका वगैरह खड़ा होगा, रेस्ट ब्लू वंस. ठीक है, they will support them, whereas Maduro will be supported by Russia, China, etc. Belarus, ईरान, सीरिया, टर्की. आप देख सकते हैं कैपिटल इज कैराकस. एंड और क्या पढ़ना था, प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट यू शुड नो. देयर इज एन एलिगेशन ऑफ डिक्टेटरशिप. देन 92% क्रिश्चियन है. और क्या डिस्कस करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, इतना पता होना चाहिए. और करेंसी, हाँ, बोलीवर.
मैंने बताया था साइमन बोलीवर वाज अ वेरी फेमस पर्सन who brought revolution, communist revolution in South American, Latin American countries. तो इन्हीं के नाम पर बोलीवर करेंसी इज देयर, है ना. और कैरेक्टर्स कैपिटल है colonized, they were once colonized by Spain. मैंने बताया कि लैटिन अमेरिका में there were control of Spain and Portugal. If they don't have, वही तो मैं बता रहा हूँ, सेल करने के लिए प्रॉब्लम ये कि प्राइस कम है तो उतना मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा होगा, ठीक है. एंड गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी उतना नहीं हो कि नहीं बेचना चाह, हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे हो ऑयल वेल्स में, देयर आर मेनी इश्यूज. ओके, सैंक्शन लगा दिए गए, सो दे आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट. लेट्स से यूएस पुट सैंक्शन on Venezuela, then Venezuela cannot export to many countries. There are a lot of restrictions that are imposed. तो इस वजह से भी दे आर नॉट एबल टू सेल. तो ये सब बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है. ओके, हाँ, तो ये हो गया वेनेजुला, वी आर डन. नाउ लेट्स मूव ऑन. यूएस सैंक्शंस, वेनेजुला रेफ्यूजी क्राइसिस, पीपल हैड लेफ्ट वेनेजुला आल्सो, वो सब लोग छोड़ के भाग गए दूसरी जगह, है ना. डिफॉल्ट, दे हैड बिकम डिफॉल्ट, है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की वजह से. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर दे आर नॉट एबल टू पे बैक द लोन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना. ये भी काफी न्यूज में था एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अर्जेंटीना आल्सो. सो कहां पर है अर्जेंटीना? ये वाला अर्जेंटीना. कैपिटल क्या है? ब्यूनोस आयर्स. अच्छा, अर्जेंटीना का डिस्प्यूट है, ये फॉकलैंड आइलैंड कहते हैं. दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड. अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड डिस्प्यूट है ये. और इसके बीच में जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CLAT. This small strait from where the ships can go. So there was a question in CLAT कि Atlantic Ocean, this is Atlantic Ocean, and PO, Pacific Ocean is connected by, एक था Panama Canal was the option, and the other option was Strait of Magellan, so both are right. ठीक है. खैर, तो ये अर्जेंटीना हो गई. अर्जेंटीना से लायनल मेसी is very famous, so people know more about Lionel Messi and less about Argentina. ठीक है. What is the current crisis in Argentina? Because whenever someone talks about Argentina, if you are any person in India, what do you know about Argentina? The only thing he knows is Lionel Messi. सिर्फ यही पता था, हाँ मेसी वहां का. Okay, people do not know much, but yes, you should know as a serious student, है ना. What is the current crisis in Argentina? Last point in America. वो केप ऑफ गुड होप, वो अफ्रीका में, उसकी बात कर रहे हो कृषि? Are you talking about Cape of Good Hope? Current crisis in Argentina, devaluation of peso जो इनकी करेंसी है, and balance of payment crisis. These are the main reasons. ठीक है. So what is this? है ना, आप देख सकते हो, it is an ongoing devaluation of currency. So devaluation के लिए export better होता है, but import gets impacted, है ना, caused by high inflation, high steep fall in the perceived value of currency, plus of course balance of payment crisis means foreign exchange reserve is very less, and that is why recently, अगर आपने देखा होगा, देखो कब की न्यूज है, डेट देखो, डेट. It's a part of current affairs, 11th April 2025. IMF executive boards approves 48-month $20 billion extended fund facility to Argentina. Okay. Okay. ठीक है. सो अब आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिजर्व में देयर आर इश्यूज, है ना, इन्फ्लेशन में इश्यूज आर देयर. ठीक है. हायर टैक्स रेट्स, emergency control. So these are some of the issues regarding it, है ना. 2018 से ये क्राइसिस चला रहा है, अर्जेंटीना मॉनेटरी क्राइसिस. देखो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, उतना डिटेल नहीं जाना है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 1990, अगर 1990 चलते जाओ 2023 में, तो ये जो है ना 200% चेंज आता है, ये वाली लाइन 200% चेंज. ठीक है. इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर. अब आप इसको जूम करके देखो, ये वाली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट, ये 100% दिखाता है. ठीक है. और ये 200%. तो ये वाली लाइन देखो, ये 100% चेंज दिखा रहा है इन्फ्लेशन में, ईयर ऑन ईयर चेंज. अब देख सकते हो 2021-22 में कैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है. सो दिस इज जस्ट एन आइडिया, रटना नहीं है कुछ, बट यू विल सी दैट रीसेंट ईयर्स में, इफ यू सी इन रीसेंट ईयर्स इन अर्जेंटीना आल्सो वी हैव सीन समथिंग सिमिलर टू दैट. ठीक है. सो हाई इन्फ्लेशन इज देयर, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो.
constant problem economy of Argentina with an annual rate of this much, second only to Venezuela. Venezuela के बाद सबसे बड़ा समस्या अर्जेंटीना में in South America, है ना? So these are the things, है ना? Inflation problem after Venezuela is there in Argentina. ठीक है, Venezuela के बाद सबसे ज्यादा समस्या है. ठीक है, थोड़ा बहुत अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं. So 8th largest country after India. I hope you are aware India is the 7th largest country of the world, and the 8th is Argentina. Capital is Buenos Aires. Falkland Island dispute we have already discussed, है ना? ये इनका फ्लैग है ना? तो this is Argentina, we have discussed. Then Buenos Aires capital है, स्पेनिश बोली जाती है, क्रिश्चियनिटी 78.2% है. अच्छा, अब देख रहे हो मोस्ट केसेस में ना यहाँ लोग क्या नो रिलीजन बहुत हाई है. 20.5% people are no religion, means they perhaps do not believe in God, which is a huge number. Argentina peso is the currency. ये currency वगैरह आजकल CLAT वाला उनका favorite topic है. President is Javier Milei. ये president बने थे recently, है ना? December 2023 में election हुआ था. This person is important, है ना? Javier Milei. So the election happened November 2023 and December 2023 में, and he won it. ठीक है? Now what is the thing? Before him, Alberto Fernandez was the president. तो इनसे वो सारे संभाल नहीं पाया था. He was also not very able to handle that inflation, etc. But this time he did not fight for the election. This time मतलब जो अक्टूबर नवंबर में हुआ था, अक्टूबर नवंबर 2023 में election happened, he did not fight for another term. So Nicolas Javier Milei fought the election and he won it. So हुआ ये था कि before Javier Milei's election, Argentina had given the proposal to join BRICS. आपने सुना होगा. It was very much in the news that Argentina was planning to join BRICS. But the moment he became the president, he said, no, I am pulling out. Formally rejects BRICS membership. So that is why you should know that BRICS में Argentina is not a part of it. So they have reversed the decision after the new president got elected. The earlier president means Alberto Fernandez decided to join the BRICS, but when the election happened, Javier Milei came to power and he decided to reverse it. हाँ, जो भी कह लो, US will bless whatever you can say. हाँ. So that is what you should be knowing about. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button. I hope you would have enjoyed the session and understood the basic concepts. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.